एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है किसी भी प्रोसेस की, और that is the activation energy is inversely proportional to the reaction getting finished. Enzymes function to lower the activation energy. They try to lower the activation energy, or that's how they facilitate the formation of the transition state in the uh, reaction. Okay, so the greater the value of the activation energy, the slower will be the reaction rate, or vice versa. अब ये एंजाइम्स कैसे ऑपरेट करती हैं, किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, और किस तरीके से प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है, दैट विल बी कवर्ड इन अ सेपरेट वीडियो. हर प्रोसेस की एक डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और एंजाइम्स जो होती हैं उन्हें लोअर करके, उन्हें रिड्यूस करके प्रोसेस को फास्ट करती हैं. ओके, how does enzymes lower this activation energy? They provide enzymes lower the activation energy by providing a site, the active site, where substrate molecules can bind and interact more readily. Substrate क्या होता है? Substrate जो होता है जिससे enzyme bind करती है, bind करने के बाद जो product बनता है, fast product बनता है, that is how the reaction works. तो enzymes जो होती है उन substrate के active site से bind करती है, and that's how they lower the activation energy and proceeds with the reaction. The reaction path turns in this way. Okay. So what is the general properties of enzyme? See, an enzyme is a biocatalyst, as I have already explained, which increases the rate of chemical reaction without itself being changed in the overall process. Like enzyme does not get changed in the overall process. Enzymes जैसे initially होती है वैसे ही in the end of process रहती है. Enzymes does not change, and virtually all cellular reactions, जितने भी cellular reactions होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको सबको एंजाइम्स की जरूरत होती ही है. नाउ एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? दे आर मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर. ओके, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. नाउ some enzymes, there are some exceptions जहाँ पे enzymes जो हैं catalytic RNA molecules हैं. Otherwise most of the enzymes are proteins, proteinaceous in nature. They are highly specific. What do you mean by highly specific? They are highly specific for the substrates. You cannot use any enzyme to bind with any substrate. There are particular enzymes which are specific for the particular substrate. They are highly specific in that way. Enzymes do exhibit enormous catalytic power. It increases the rate of reaction by lowering the activation energy. Enzymes do not change the equilibrium state. This is the most important property. Enzymes जो होती हैं वो equilibrium state